हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ एंड साउथ डिबेट के ऊपर। सो सबसे पहले अगर हम देखें, नॉर्थ मींस डेवलप्ड कंट्री, ओके, और साउथ मींस डेवलपिंग कंट्रीज, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से रिच एंड पुअर कंट्रीज, ओके। सो अगर हम बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिबेट किसके ऊपर लिया जा रहा है? एनर्जी कंजप्शन के ऊपर, ओके। जैसे पर कैपिटा यूएस मच मोर हायर देन एनर्जी कंजप्शन ऑफ अदर कंट्रीज। अगर 90s के टाइम के या 18s टाइप के अगर हम देखें तो वेस्टर्न, है ना, वेस्टर्न जो जितनी भी कंट्रीज हैं और साथ ही यूएस, इंक्लूडिंग यूएस, तो उन्होंने जितना कंजप्शन किया है उतना इंडिया और भी कंट्रीज अगर हम देखें तो अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग क्या लेके आए हैं, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कंसेप्ट लेके आए हैं कि जो एनवायरनमेंट है ना, उसको बचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कलेक्टिव है, ओके। देन नॉर्थ कह रहा है डिपेंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओके। नॉर्थ डिपेंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है, एंड साउथ का मानना है तो कुछ सर्वाइवल का, क्योंकि जैसे दिल्ली और भी जगह अगर हम ले लें तो इंसान अगर ऐसा रहे ना कुछ बीमारी लग ही जाएगी, क्योंकि इतना इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हम कह सकते हैं, ओके। देन ब्रिटेन, ब्रिटेन लैंड कमीशन, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए, ओके। इसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें रियो अर्थ समिट में, ओके, जो कि 1992 में हुई थी, है ना। देन अगर हम देखें आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट conceptualized for the first time during the Rio Earth Summit, okay. कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबल यूएसए, यहाँ पे जो प्रिंसिपल आए थे यूएन के, कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे यूएस ने एग्री भी नहीं था और ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया। पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल्स, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, नो क्रेडिटेबिलिटी, नो क्रेडिबल एविडेंस, है ना। यूएस इस पे भी राजी नहीं हुआ है अगर हम देखें तो, ठीक है। पे जो पॉल्यूटर पे जो प्रिंसिपल है इस पे भी रेडी नहीं हुआ। देन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंडियाज अप्रोच अगर हम देखें तो सौबिक चक्रवर्ती, है ना, उन्होंने बोला है कि देखो, नॉट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया नॉट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी विच अ ग्रेट पावर शुड हैव टेकन, ओके। तो मतलब जो ग्रेट पावर को अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वो इंडिया ले नहीं रहा है। और यहाँ पे ना आर्ग्यूमेंट अगर हम देखें इंडिया का ना, तो जैसे लो पर कैपिटा बताया है, इनकम कंट्री है ना, एंड पुअर कंट्री है, एंड हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 140 करोड़। सो बेसिकली उनको यहाँ पे चल के देखना चाहिए। पर सुबोध चक्रवर्ती जो है ना, उन्होंने बोला है कि देखो, अगर इंडिया को अगर ग्रेट बनना है तो उसको उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी ना, आईपी मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे। देन even though the world has become a global village, as stated by Marshall McLuhan, northern side of the globe is the biggest consumer and southern side globe is suffering from poverty, misery, etc., and because they lost their resources to reach nation of the north. Then 23% of world population is living in the industrial countries, it earning 85%. Then energy consumption per capita of USA is measured like almost 25 to 35 times of African countries. With respect to biodiversity, it is 70% of the biodiversity is concentrated in the 12 mega diverse countries, and developed countries want to developing countries to take action for the preservation and conservation of their biodiversity resources. And however, the cost of biodiversity protection program is emerged range of 12 to 14 billion dollars. Okay, then Britain Land Commission. Origin of the concept of sustainable development is credited to the Britain Land Commission report, and according to this report, the sustainable development is development that takes into account the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs and improved living conditions for all, better protected and managed ecosystem, and suffer and more prosperous future. Then Rio Earth Summit and its outcome. This summit is popularly known as UN Conference on Environment and Development. This was the biggest summit ever held, which included following like Rio Principle, okay,
precautionary principle. Even when there is a lack of enough scientific evidence, through countries will take up actions for protection of environment. USA has an objection, sorry. Then polluters pay principle, historically responsibility, but USA does not support this. And CBT, common but differentiated responsibility. Agenda 21, it provides a detailed program of action. It covers various issues like combating deforestation, managing hazardous wastage and fragile ecosystem. Then Agenda 21 has resulted into the following global environment facility GEF. GEF multilateral financial mechanism that provides a grant to developing countries for projects that benefit global environment and promotion sustainable livelihood in a local communities. Then Commission for Sustainable Development, its purpose is to review the program of implementation of Agenda 21. Then critical analysis of India's approach. Subhak Chakravarti, India is not a regular poor country. It should not take defensive strategy. Okay, like low per capita income. World is not giving by the India's low per capita status. World recognize India's economy as an ideological potential. Hence, India should not behave like an ordinary country. Okay, and India should assume great power status. It has to show that whether it prefers to hide behind India's poor status or prefer to negotiate with its strength. Okay, then India has to make changes in domestic spheres, and Indian industries do not allow pollution norms, and hence India should improve its internal capacity. Then and enforce environmental complaint norms. India could negotiate at a global platform with a rather greater moral and diplomatic strength. Then India should take necessary steps which provide its strength to India's argument, like announcement of target of net zero greenhouse gas emission by 2070. Okay, that can uh, reducing its emission intensity by 45% below the 2005 level by the 2030. Then to increase the share of non-fossil power capacity to 50% by 2030. Okay, such a step provide the strength India's argument, and this approach requires legally binding commitment on the part of developed countries to finance and developing countries towards a smooth transformation in their practices. Then industrialized nations have tried to ignore the concern of developing countries. For example, no clarity with respect to the climate change on part on USA. Okay, so for then it is fairly understandable that the path of sustainable development is written with the immense gap that exists between North and South, and global negotiation and international agreement have remained unfulfilled and disappointing. The increased conflict between the trade and environment are only making the task more complicated. It is more important that nations apply logic and understanding with the long-term perspective, initiated concentrate action towards sustainable development and environment. So here is some questions for to solve. Okay, previous year question. Discuss SD means sustainable development goal as set by UN, and examine role of UN. Okay, framework convention on climate change and other major efforts by UN to address the global environment crisis. Then global common belong to global society, and it's require global attention and okay comment. So ये सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, है ना? तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.